नमस्कार दोस्तों। शाम के 7 बज गए हैं। हमने 785 किलोमीटर की ड्राइव ऑलरेडी कर ली है। बैटरी सिर्फ अब 10% बाकी है और रैडिसन गोरखपुर अभी भी 33 किलोमीटर दूर है। आज हमारे नेपाल ट्रिप का पहला दिन था। नोएडा से गोरखपुर 819 किलोमीटर्स हमारी प्यारी BMW iX1 में पूरी फैमिली के साथ। एज द ड्रिल गोज, हमने ओवरनाइट चार्ज कर लिया था एसी चार्जर पे गाड़ी को। गाड़ी हो गई है 100% चार्ज और हम अब तैयार हैं यात्रा शुरू करने के लिए। The car is going to be fully loaded with Aparajita, Ayushi, Kuhu and I and our luggage. Peak summers, so AC will be maintained between 22 to 24. उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे स्टेट ऐसे ही नहीं कहा जाता. It has the best expressways. Started on Yamuna Expressway to proceed on to Lucknow Expressway, followed by Purvanchal and Gorakhpur Link Expressway. Absolutely world-class infrastructure. However, I wish I could say the same about charging infrastructure as well. कल मैंने मम्मा को कॉल किया ये बताने के लिए कि we are going to Nepal. She was asking me flight कितने बजे की है. See, I knew it wasn't going to be a flight, especially considering all the driving you've been doing recently, either exploring EV infrastructure. So I had a feeling. See, Kuhu is spot on here. We could have taken a flight as well. But for us, trips are not about destination. They are focused on journey instead. और इस जर्नी में तो हमें ये भी देखना था कि how fast our EV infrastructure is evolving. We have done this route while going to Patna, but that was 4 months back. We did face lots of problems. But I wanted to check it out how things have changed in these 4 months. अब धूप बढ़ते जा रही है, टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री हो गया है. Because we started late, we are trying to cover it through slightly increased speed. I am driving between 110 to 120. उसके कारण रेंज पे इम्पैक्ट होना शुरू हुआ है. एनीवे कार इज फुली लोडेड. you can see the range has now dropped to 293, which is pretty significant. मेरा AEC कभी भी 17.1 वगैरह नहीं होता. It is typically in the range of 15 point something to 16 point something. But because I am driving fast, there is an impact on the range. Because AEC is on the higher side, I have put the car on cruise control to see if driving at a steady speed will help me in bringing the AEC down. One thing which I want to highlight is this car doesn't come with adaptive cruise control, and hence adaptive regenerative braking is not kicking in when you are in cruise control, and that is leading to the energy consumption being higher. Now we have entered Agra Lucknow Expressway, 302 kilometer long, built by UP-ADA. Very good road, just that the quality is not as good as Yamuna Expressway. Last time there was construction work happening or other repairing work happening, and because of that both sides traffic was on the single carry. अभी अगर रोड बन गई है तो अच्छी बात है, otherwise this becomes a problem. दोनों साइड का ट्रैफिक आता रहता है, slow down considerably and it is not safe also. That is why I avoid driving on this road particularly रात में. अगर दोनों साइड का ट्रैफिक आ रहा है तो यू कैन अंडरस्टैंड राइट, इट कैन गेट वेरी वेरी डेंजरस. इसके साथ हमारे 200 किलोमीटर पूरे हो गए हैं. अभी तक AEC 17.2 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर रहा है. बैटरी कंज्यूम 57%. रेंज अभी बाकी है 164 किलोमीटर का. गर्मी बढ़ रही है. अब टेम्परेचर 32 डिग्री हो गया है और AC हमने मेंटेन कर रखा है वही 23-24 के बीच में. With SOC of 17% and expected range of 63 kilometers, we decided to pull over to Saifai charger. And good part is that I see one slot available, so I'll get the car charged. Unfortunately for me, 60 kilowatt charger is dead. 240 kilowatt is occupied. Wait करने के अलावा अब कोई option भी नहीं. Got into conversation with iX1 owner who was charging his car on 240 kilowatt charger. His car was already charged to 92%. Explained it to him that charging after 80% significantly slows down the charging and he's losing on time rather than gaining on range. His driver was not relenting, but the person was a gentleman, understood my point, he and his son, and they decided to roll over. Next was turn of the Nexon. They had come before us. If you recall from my Patna journey video,
I had reported about the trash which is all over the place here. Nothing has changed. बट इसके लिए मैं गवर्नमेंट या सीपीओ को नहीं ब्लेम करने वाला. इट इज़ अस हु आर डूइंग दिस. ईवी ओनर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाना पड़ेगा. दे शुड नॉट कंसिडर चार्जिंग स्टेशन एज अ पार्किंग पॉइंट. दिस car has been here now for more than an hour. The white car is now fully charged, but he has decided not to move the car. Finally, ये लोग अब वापस आ गए हैं और होपफुली हमें अब चार्ज करने का मौका मिलेगा. इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग वेट. यहाँ पे बैठे बैठे बिल्कुल हालत ख़राब. आफ्टर अ कपल ऑफ फेल्ड अटेम्प्ट्स, finally the charging has started. In the dashboard, it is showing that it will get ready by 11:40. गाड़ी चार्ज में लग गई थी और उसके बाद मैं क्विक एक अपने टॉपअप के लिए गया था. आई हैड अ सैंडविच एंड आइस अमेरिकानो. अभी गाड़ी लगभग 50% से ज़्यादा चार्ज हो गई है. इट विल टेक अनदर 15 मिनट्स टू गेट टू 80. It will take another 15 minutes to get to 80. After that we will start. I'm walking across to the car so that I can check the speed at which the car is getting charged. And उसके बाद फिर मैं एक बार 80% हो जाए तो गाड़ी लेके वापस फूड प्लाजा पे जाऊंगा. बच्चों को पिकअप करूंगा. ये प्रॉब्लम एक्सप्रेसवेज की जो है वो उसका कोई सोल्यूशन होना चाहिए. द चार्जिंग पॉइंट ऑप्शंस हैव बीन given to certain players and they are not doing the best. क्यों ना कुछ और players को chance दिया जाए. Someone for whom it is the primary business. Someone who wants to do it as the primary thing. Not Adani's, not Tata's, not OMC's, जिनके लिए it's just one of those check boxes. But someone who is into charging only, CPOs, या फिर न्यू प्लेयर्स हु वांट टू सेट अप थिंग. क्योंकि उनका फोकस इस पे किसी भी दिन ज़्यादा होगा वर्सेस प्लेयर्स जिनके लिए इट इज़ जस्ट वन ऑफ द टिक बॉक्सेस. दिस इज़ अनदर चैलेंज विच आई हैव नॉट बीन एबल टू बीट, स्पेशली ऑन अदानी चार्जर्स. द मशीन इज़ 240 किलोवाट चार्जर. 2 गाड़ियाँ लगी हुई हैं, राइट? एंड लुक एट द चार्जिंग स्पीड विच आई एम गेटिंग, 49 किलोवाट. दिस इज़ जस्ट अनरियल. अब कार हो गई है 80% चार्ज, जिससे हमें लगभग 290 किलोमीटर का रेंज मिलेगा. टोटल एनर्जी डिस्पेंस वाज 40 किलोवाट आवर. ये गुड इनफ है हमें लखनऊ तक ले जाने के लिए, जहाँ पे हम चार्जिंग के लिए और लंच के लिए ब्रेक करेंगे. टोटल हमें लगे 1 घंटे 20 मिनट यहाँ पे, जिसमें से सिर्फ 30 मिनट चार्जिंग में गया. मैं इस चार्जर को मैक्सिमम 2 स्टार रेटिंग दूंगा. दैट टू ओनली बिकॉज द रेट इज़ वेरी वेरी लो. तो चार्ज करके निकले हुए हमें 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कर लिया है. 31% रेंज ड्रॉप हुआ है. इट हैज टेकन अस 1 आवर टू रीच हियर. 36 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 किलोमीटर पर आवर के आसपास का स्पीड. एंड नाउ एफिशिएंसी हैज स्टार्टेड ड्रॉपिंग. 18.5 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर. हीट बढ़ रही है और हीट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है एसी कंजम्पशन पे, और एसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है रेंज. सो माई वर्डिक्ट ऑन Agra Lucknow Expressway, excellent road. Unfortunately, I can't say the same about charging infrastructure. Mainpuri sucked, and even the next one was in a similar state. खैर हम पहुंच गए लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क. यहाँ पे ग्लाइडा का बहुत ही खूबसूरत सेटअप है. We reached here at 9% charge left, but अभी हम यहाँ पे चार्ज करेंगे अच्छे से. खाना फिनिश करते करते हमने गाड़ी को कर लिया है 96% चार्ज. हमें रेंज मिलेगा 351 किलोमीटर्स का, और 315 किलोमीटर्स का टोटल जर्नी अभी बाकी है रेडिसन गोरखपुर तक का. वी हैव एंटर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे. यहाँ से 294 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है. आई हैव अ रेंज ऑफ 325 किलोमीटर्स, सो I should safely reach the hotel. So, Purvanchal Expressway, for instance, is 340 odd kilometers. Now, it has 3 charging points, if I remember from my last trip correctly. The first one is Barbanki, second one is Sultanpur, third one is Azamgarh. And if even one is not functional, then think about the inconvenience
an EV driver would have to go through, right? I am going to put the infrastructure to test today. अब इक्वेशन काफी इंटरेस्टिंग हो गया है. 210 किलोमीटर का रेंज बाकी है और हमें 216 किलोमीटर ट्रैवल करना है. So took the first available cut. There is a HP pump here, and I'm sure government would have installed a charger here. एक HP charge का मशीन भी दिख रहा है और मज़ेदार बात यह है कि इसने बिल्कुल ही डिसअपॉइंट नहीं किया है. ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है. Right next to the HP charger you have Adani, and let's see what they have in store for us. It's on for sure. So if you see, it says input under voltage. But जैसे मैंने पहले बताया था, ये सारे रूरल एरियाज में है तो वोल्टेज का बड़ा इशू होता है, and that is what has happened. There is voltage issue, and because of that the charging session could not get initiated. तो वो इंटरेस्टिंग पार्ट लाइफ का भी और इंटरेस्टिंग हो जाएगा क्योंकि हम 10 मिनट जो रुके, एसी चल रहा था, थोड़ा सा तो करंट यूज़ हुआ है. 186 किलोमीटर, 208 किलोमीटर का रेंज बाकी है. देखते हैं. Can a EV driver have an unexciting day? Never. What is the range? 40 kilometers, sorry. And what is the distance to cover? 33 kilometers. 800 kilometers done. 19 more kilometers to go. And range is 28 kilometers. SOC और expected range देखने के चक्कर में हमने एक टर्न मिस किया और इक्वेशन और भी ख़राब हो गया. अरे ये क्या? एक अच्छा रेस्टोरेंट दिख रहा है. क्या यहाँ पे चांसेस हैं एक चार्जर होने के? यहाँ तो दो चार्जर्स दिख रहे हैं. एक जियो, दूसरा टाटा काम नहीं कर रहा था और वाईफाई नहीं होने के कारण जियो भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा. Finally the charging has started. It is a 90 kilowatt charger, so it will take a bit of time. However, did we have any option? So currently getting charged at 28.3 kilowatt. ये रॉन्ग टर्न हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया. हमने एक बहुत ही छोटू सा रिचार्ज मार लिया है सो दैट वी कैन गो टू द होटल एंड देन विल पुट इट ऑन चार्ज देयर इन द होटल. सो फाइनली वी आर हियर. 832 किलोमीटर्स टोटल. जो जर्नी हमें शायद 10 घंटे में ख़त्म कर लेनी चाहिए थी, उसे पूरा करने में हमें लगे 11.5 घंटे. एवरेज स्पीड 87.8 किलोमीटर पर आवर. Average energy consumption was 18 kilowatt hour per 100 kilometer, and mind it, fully loaded car with full luggage and peak Indian summer. Total energy consumed was 149.5 kilowatt hour. Charging cost close to 3000 kilometer. यही distance अगर हम एक पेट्रोल कार में कर रहे होते तो 10,000-12,000 रुपये कहीं नहीं गए. Toll because these were on the state expressways, so we had to pay toll despite having the annual pass. It costed us around 1,200 rupees. But overall, super satisfying journey. Except for the failure of Adani and Tata chargers, which created problems, we had a real good time. अगले एपिसोड में हम बात करेंगे हमारी नेपाल एंट्री और आगे की कहानी. ये जगह बिल्कुल अलग है दोस्तों. बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब. वी क्रॉस सनौली बॉर्डर. BMW iX1 ऑफिशियली इन नेपाल. Possibly the first publicly documented BMW iX1 to drive across from India's capital to Nepal's capital. और चार्जिंग, भाइयों यहाँ का चार्जिंग का हिसाब बिल्कुल ही अलग है. इट्स वेरी इकोनॉमिकल एंड वेरी ईजिली अवेलेबल. लेकिन एक और चीज़ जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, BMW की डिजिटल की, ये यहाँ किसी काम का नहीं. क्योंकि जब आप किसी दूसरे देश में आते हैं तो पता चलता है कि आपके यहाँ का प्रीमियम वहाँ पे प्रीमियम है कि नहीं. देखते रहिए व्हाट इन द गराज. ड्राइव सेफ, ड्राइव बोल्ड, ड्राइव इलेक्ट्रिक.